Namaste everyone. I'm Ashka Agarwal from Hyderabad. Today we are completing the last chapter of the Bhagavad Gita, chapter 18, part 2. This is a very special video for me because this is the last chapter, the final part, the completion of all 18 chapters of the Bhagavad Gita. In the first part of chapter 18, Sri Krishna Bhagwanji explained that everyone has duties and everyone has to act. But do your duty sincerely and don't worry too much about the result. Now, in the second part, Sri Krishna Bhagwanji gives Arjuna the most important teaching of the whole Bhagavad Gita. This is the part I was waiting for. Let's see what Sri Krishna Bhagwanji explains to Arjuna through the final part. Before beginning the recitation, let us pray together. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Now I will begin the recitation of chapter 18, Moksha Sannyasa Yoga, part 2. न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्राह्मणक्षत्रिया विषं शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं शान्तिर्रार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमस्तिक्यं ब्रह्मकर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजोधृतिः दाक्ष्यं युधे चाप्यपलायनम् दानमीश्वरभवश्च क्षत्रं कर्म स्वभावजम् कृषिगौरक्षयवाणिज्यं वैष्कर्म्यं स्वभावजम् परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रास्यपि स्वभावजम् स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणं तमभ्याच्य सिद्धिं विन्दति मानवः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः असक्तबुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा
बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मनां नियम्य च शब्दादीन् विषयांस् त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्यदस्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यत वा कयमानसः ध्यानयोगपरो नित्यम् वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम् विमुच्य निर्मणः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति निकाङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् भक्त्या मामभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनार्तनम् सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वन्नो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्ता सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् ऋष्यति अथ चेत्त्वमहङ्कारान् अशोष्यसि विनक्ष्यसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यैश्च व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यसि स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत् ईश्वरा सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमाख्यान्तम् गुह्याद् गुह्यतरं मया विमृश्यैत्यदशेषेण यथेच्छासि तथा कुरु सर्वगुह्यात्तमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्यार्ची मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच इदं ते नातपक्षया नाभक्तया कदाचन न चाशुश्रूषवे वच्यं न च मां योऽभ्यसूयति य इमां परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभितस्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैष्यत्
नित्यसंशयः न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्यः प्रियतरो भुवि अदिश्यते च य इमाम् धर्मं संवादमव्ययोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यात्मिति मे मतिः श्रद्धावानन् सूयश्च नयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभं लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय सञ्जय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रौष्यामि अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादात् श्रुत्वाणाम् एतत् गुह्यात्महं परम् योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादमिममद्भुतम् केशवर्जुन्यहो पुण्यम् पश्यामि चरम् मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरेः विस्मयो मे महन् राजन् दृश्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिः ध्रुवानेतर्मतिर्मम ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः. Now I will explain you the simple meaning of chapter 18. In this part, Shri Krishna Bhagwan Ji gives Arjuna his final and most important teaching. He says, do your duties according to your nature. Don't try to be someone else. Just be who you are and do what you are meant to do sincerely. Sometimes I also feel like I want to be like someone else. Someone who is better at studies or better at something I find difficult. But when I read this, I felt, just be yourself, do your best, and that is enough. And Shri Krishna Bhagwan Ji says something so beautiful, something that I think is the heart of the whole Bhagavad Gita. He says, Sarvadharmam परित्याज्य मम एकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच. It means, leave everything else. Just come to me. Surrender to me completely. I will take care of you. Don't be afraid. When I read this, I felt like God is saying, you don't have to carry everything alone. Just come to me. I'm here. I have heard this shloka many times, but every time I read it, it feels new. And then Arjuna, who was so confused and sad at the very beginning, finally says, my confusion is gone.
My mind is clear now. I am ready. I will do as you say. Because the whole Bhagavad Gita started with Arjuna sitting down in sadness, and it ends with Arjuna standing up, clear, peaceful, ready. And Sanjaya, who was telling the whole story, says at the very end, wherever there is Krishna and wherever there is Arjuna, there will always be goodness, victory, and righteousness. I love that ending. That is what I understood from chapter 18. And that is what I understood from the whole Right. Bhagavad Gita. Before I say goodbye, I want to say something from my heart. I am so grateful to my Guru, Sheetal Khandelwalji, for teaching me the Bhagavad Gita with so much love and patience. Without your guidance, I could have never learned all 18 chapters. Thank you so much deeply. I'm also deeply grateful to Pratibha Sharma ma'am from Arogyam Wellness Path for giving me this beautiful opportunity to share these teachings with everyone. Thank you so much, ma'am. And thank you to my parents, grandparents, and my little sister for always being there, for always supporting me, and for encouraging me every single day. And above all, thank you to Lord Krishna Bhagwanji, whose blessings have always been with me, and to everyone who has watched and listened through all 18 chapters. Thank you so much from the bottom of my heart. I hope that the Bhagavad Gita brought some peace to you. I hope it made you feel that God is always with you. Please do share these videos with your family and friends so that more people can hear these beautiful teachings of Sri Krishna Bhagwanji. If you like the series, please like, share and subscribe. Jai Shri Krishna. बहुत ही सुंदर शब्दों में हम आपको बार बार याद भी करेंगे कि 18 दिन कैसे निकल गए, हमें पता ही नहीं चला। संक्षिप्त में फिर भी मैं हिंदी में इसका अनुवाद बता देती हूँ, जैसे कि मैं रोज बताती हूँ कि इस चैप्टर में भगवान ने अर्जुन जी को क्या संदेश दिया है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म, ज्ञान, भक्ति और त्याग का सार बताते हुए वे अर्जुन से कहते हैं कि अपने कर्तव्यों का पालन निस्वार्थ भाव से करो और सभी कर्म मुझे सौंपते जाओ। आप फल की चिंता मत करिए, आपका काम है सिर्फ कर्म करना। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उनको बस समर्पित करते जाइए और कार्य को पूर्ण करिए, फल आपको जरूर मिलेगा ही मिलेगा। इसका मुख्य संदेश क्या है 18वें अध्याय का कि ईश्वर पर भरोसा रखिए, अपना कर्तव्य करते जाइए, फल की चिंता छोड़ दीजिए और पूर्ण समर्पण के साथ जीवन को जिया जाए, तभी हम सही मार्गदर्शन और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अक्षका जी का बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद दूंगी कि वो बोलती हैं कि मैंने अवसर दिया, लेकिन सच बोलूं तो उन्होंने अवसर दिया कि हम इस पावन पर्व पे, पावन महीने में इतना अच्छा उनके मुख से हमने सुना है। मतलब जितना बोले उतना शब्द कम है कि उन्होंने अपने आप को भी मौका दिया और हम सबको मौका दिया कि वो भगवत गीता का पाठ हमारे चैनल के माध्यम से सब कोई सुन सके और सभी इसको हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि यूट्यूब पे तो ये हमेशा रहेगा, तो आप जब चाहें तब अपने कन्वीनियंट के हिसाब से इसको सुन सकते हैं। तो आशका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर दोबारा किसी भी लेसन के साथ आपके साथ मिलेंगे। सभी को राधे राधे।